Okay, so please write during windstorm or cyclone, during windstorm or cyclone, the wind is blowing with very high speed. During windstorm or cyclone, the wind is blowing with very high speed. Full stop. At the top of the hatched roof, at the top of the hatched roof, at the top of the hatched roof, due to cut surface, at the top of the hatched roof, due to cut surface, a low pressure P2 generates. A low pressure P2 generates as the velocity V2 is very high. As velocity of air V2 is very high. अगर आपको ये अच्छी लाइन नहीं लग रही है तो मैं बता सकता हूँ एक बार फिर और नए तरीके से कि at the during windstorm or cyclone, the speed of wind is very high. Full stop. At the top of the hatched roof, the surface is curved. So, speed of air or wind is very high, V2. So, speed of air or wind is very high, V2, and creates a low pressure P2 at the top. And creates a low pressure P2 at the top. Full stop. While inside the house, air is present, atmospheric air is present. While inside the house, atmospheric air is present with high pressure P1. With high pressure P1, full stop. According to Bernoulli's theorem, paragraph change करके, according to Bernoulli's theorem, air moves from higher pressure P1. Air moves from higher pressure P1 to lower pressure P2. Air moves from higher pressure P1 to lower pressure P2. Full stop. So, the high pressure air from inside the house, present inside the house, moves upwards and blown off the roof without damaging the walls. एक और होता है, आपने देखा होगा समटाइम्स कि when two boats are there, parallel boats, पानी में बोट्स जा रही हैं, पैरेलल बोट्स, एंड दे ऑटोमेटिकली कोलाइड, अपने आप टकरा जाती हैं. क्यों टकरा जाती हैं? देखिए,
ये एक चप्पू चल रहा है, ठीक है, एक यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी, इसका भी यहाँ है, ये यहाँ भी है, सॉरी यहाँ भी है और यहाँ भी। ओके, सो नाउ बिटवीन द टू बोट्स व्हाट हैपन, 4 चप्पूज आर देयर एंड ड्यू टू दैट वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मोर हियर। तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कौन सी वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी होगी, and due to v2 velocity pressure generates p2, and here velocity is v1 and pressure is p1, here also p1, and water moves from higher to lower pressure। ये देखो ऐसे, तो ये दोनों बोट अपने आप आपस में टकरा जाएगी, आप नहीं चाहते तो भी। ऐसे कई बार साइकिल में भी होता है, आप बहुत तेजी से साइकिल चला रहे हो साथ साथ में, तो आगे के दोनों पहिए गले मिल जाते हैं, आपको लगता है अरे ये क्या हो गया। तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू बर्नौलीज थ्योरम। तो लिखिए इसकी, इसमें लिख दे हेडिंग, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो। When two parallel boats are moving in water या कुछ और नई लाइन, रोइंग क्या बोलूं, आपको क्या पसंद है कि ठीक है ये, अरे इज इट ओके या कुछ और, रोइंग कर दीजिए, rowing, ROWING। When two parallel boats are rowing in water, then between the two boats, due to high velocity v2, a low pressure p2 creates between the two boats, high velocity creates a low pressure p2 between the two boats, the high velocity of water v2 creates a low pressure p2, but on the either side of two boats, a high pressure p1 generates due to low velocity v1, paragraph change. We know from Bernoulli's theorem fluid moves from p1 to p2. We know from Bernoulli's theorem fluid moves from high pressure p1 to low pressure p2. So the two boats automatically collide. Last लिखो, it is advisable to stay away from the edge of the platform. It is advisable to stay away from the edge of platform during a train pass through. It is advisable to stand away from the edge of a platform while a train is passing through. पासिंग थ्रू का मतलब होता है ट्रेन रुकने वाली नहीं है प्लेटफॉर्म पे। तो मम्मी पापा जब आपको ले जाते थे तो कहते थे ना कि इधर आ जाओ, उधर मत जाओ नहीं तो ट्रेन अपनी तरफ खींच लेगी।
और आप देखेंगे भी अगर ट्रेन इज पासिंग विथ वेरी हाई स्पीड तो हमें ऐसा लगता है कि आगे की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब ट्रेन अट्रैक्ट कर रही है, हमें हिल जाते हैं अपन। या कोई ट्रक बहुत तेजी से गुजरता है, फाइन हम हिल जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि व्हेन ट्रेन इज पासिंग, ट्रेन जा रही है विथ वेरी हाई स्पीड, नाउ व्हाट हैपेंस, एयर यहाँ से ले जाएगी तो यहाँ एम्प्टी स्पेस हो जाएगा एंड यू आर स्टैंडिंग हियर and behind you there is high pressure, air is available, and here now no air or less air, so air pushes you towards the train और आपको लगता है ट्रेन अपनी तरफ खींच रही है। तो ये बर्नौली थ्योरम का ही कमाल है यहाँ पर। तो लिखिए when a train pass through then due to its high velocity v2, when a train pass through then due to its high velocity v2, a low pressure P2 develops in front of us, that is between the train and observer, full stop. A high pressure P1 is already exist. A high pressure P1 is already exist behind the observer, behind the passenger, behind the observer. फिर वही बात पैराग्राफ चेंज करके, we know from Bernoulli's theorem, आप कहोगे कितनी बार लिखवाया सर। We know from Bernoulli's theorem air moves from high pressure P1 to low pressure P2. Air moves from high pressure P1 to low pressure P2. So the observer feels attraction towards the train, and observer feels attraction towards the train and may be caught by the train, Now two more applications are there, but they are big one, that is Torricelli's theorem and Venturi meter. So that we are going to discuss in the next time. So thank you बच्चों, प्यारे बच्चों। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, bye बच्चों, bye.